Hello students, this is third module of the topic Speed Maths. In today's module, we will cover fraction and decimal. So first let me share the screen with you. Okay, so today's module we will see we will deal with fraction and decimal. Okay, so what are the things which we are going to learn? First we will see what is fraction, then types of fractions, then how to do addition, subtraction, multiplication, and division in fraction. Then we will learn about decimal, then place value of numbers, and we will also see how to do addition, subtraction, multiplication, and division in case of decimal. So first, let's start with fraction. What is a fraction? So fraction is defined as a part of something and a quantity that is not a whole number. So fractions are not a whole number. Whole number कौन होते हैं? For an example, 1, 2, 3, 4. These are called as whole number. So fraction में whole numbers नहीं होते. The word fraction is derived from the Latin word fractio, which means to break. Now, here this is one full circle. So here fractional value of this is nothing but 1 only. Now here this blue part is how much? So out of total 2, the one part is blue and one part is not shaded. So out of 2, one part is blue. So this is called as half. Now here in total there are 3 parts, 1, 2 and 3. And out of 3 part, one part is blue. So this is called as 1/3. Here out of 4 part, one part is blue, so that is called as 1/4. Here out of 5 parts, one part is blue, so that is 1/5. Similarly, this is 1/6, this is 1/7, and this is 1/8. Okay, so these are all the fractions. Now, what are the different types of fractions? So first type of fraction is called as proper fraction. Then there is something called as improper fraction, and then there is something called as mixed fraction. Now, what is a proper fraction? So proper fraction is a fraction in which the numerator is small and the denominator is big. ठीक है, फ्रैक्शन में हमें पता है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है और बीच में एक लाइन होता है. दैट इज अ फ्रैक्शन. ओके, सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच denominator is big and the numerator is small. For an example, 3/7. This is an example of a proper fraction. 3/5 is an example of a proper fraction. ठीक है. Now, if what is this meaning of the word 3/5 or 3/7 or 3/4? Suppose if I take the example of 3/4. So this is a proper fraction. Now, suppose if your mother says that you can have 3/4 of pizza. So what your mother is saying, that you can have 3/4 of pizza. Now, what does this 3/4 of pizza means? This means that if suppose this is a pizza and this pizza we have to cut into 4 parts. We have to cut it into 4 parts. So you can see here that there are 4 parts. Now 3/4 का मतलब ये होता है that out of 4 part, 3 part belongs to us. So this part we can eat, this part also we can eat, and this part also we can eat. This is called 3/4 of pizza. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, this pizza is nothing but, it's not the whole pizza. This is nothing but the 3/4 of the whole pizza. That is this. ठीक है. Now, but if your mother says that you can have 7/4 pizza, you can have 7/4 of pizza. Now, what does this mean? Now, 7/4 is nothing but an improper fraction. Why this is called as an improper fraction? Because your numerator is big and the denominator is small. So 7/4 का मतलब क्या होता है कि अगर एक पिज्जा के हमने 4 टुकड़े कर दिए ऐसे, so you can have all the 4. हम चारों के चारों खा सकते हैं, मतलब 4 में से 4 के 4 we can have. And in the next pizza, okay, now 7/4 का मतलब क्या होता है कि अगर एक पिज्जा के हम 4 टुकड़े करते हैं तो ऐसे 7 pieces we can have. So from here we can have 4 pieces and from the here we can have 3 pieces. ठीक है, so this is nothing but 3/4. Okay, so 4/4 plus 3/4 is nothing but 7/4. It means that
7/4 का मतलब क्या होता है कि ये पूरा एक पिज्जा वी कैन हैव, and in the next pizza we can have only 3/4 of the portion. So 7/4 is nothing but 1/3/4. ठीक है. Now, this 7/4 is an improper fraction wherein 1/3/4 is called as a mixed fraction. Now, why this is called a mixed fraction? So, this is called as a mixed fraction because 1/3/4 का मतलब ये होता है, this is 1 plus 3/4, wherein 1 is a whole number and 3/4 is a fraction. तो ये दोनों का mix है, whole number भी है, fraction भी है. So, this is called as a mixed fraction. Now, here the important thing is that you should be able to convert a mixed fraction into an improper fraction and improper fraction into a mixed fraction. ये conversion हमें आना चाहिए. So just we'll solve some questions. So हमारी practice हो जाएगी. For an example, here this is an improper fraction wherein we have written the fraction as 28/5. Now I want to convert this into an mixed fraction. इसको हमें एक mixed fraction में convert करना है. So 28/5 is like this. So we know 5 5s are 25, 3. Okay. So this is called as dividend. This you must be knowing. This is called as quotient. This is divisor. And this is remainder. ठीक है. So 28/5 को हम कैसे लिखेंगे? First of all, ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा. Since it is a mixed fraction, we'll write like this in this particular form. ठीक है. यहां पर हम लिखेंगे divisor. Here we will write remainder, and here we have to write quotient. This is how we have to write. So 28/5 can be written as, नीचे आएगा divisor. So ये जो 5 है divisor, that as it is we will write here. ठीक है. इस वाले बॉक्स में हमें लिखना है quotient. So that is 5 only here. And in this particular box we have to write remainder. So that is 3 over here. So 28/5 can be written as 5 plus 3/5. ठीक है. Similarly, if it is 36/7, so how we will write this? तो 7 तो एज इट इज लिखना है, फिर 7 का टेबल बोलना है और देखना है कि 36 कब आता है. सो वी नो दैट 7 5s are 35 एंड 7 6s are 42. वो बढ़ गया तो हम 5 पे रुक जाएंगे. तो 7 5s are 35, but there is a remainder of 1. Okay, so this is how we can write. So ये हमने क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ उल्टा भी आना चाहिए. जैसे हमें यहां से यहां कन्वर्ट करने आता है, वैसे ही यहां से यहां कन्वर्ट करने भी आना चाहिए. सो यू कैन सी हियर दैट देयर इज वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटर्न, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन रिटर्न 3/4. इसको हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? तो दिस इज हाउ वी विल डू. इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन 3 into 4, और जो भी आंसर आएगा उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे. So this is 3 into 4 plus 3. Division में 4 as it is. So this is nothing but 15/4. Similarly, 4 1/3. This 2 का multiplication plus addition of this. So it is 4 into 3 plus 1 upon 3. That is equal to 13/3. So this conversion you should be knowing. Now, how to do addition and subtraction of a fraction. Okay, तो फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? सो बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस वी शुड मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. सो इन फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आर पॉसिबल विथ अ कॉमन डिनोमिनेटर. फॉर एन एग्जांपल, हियर द क्वेश्चन इज 3/5 plus 2/3. सो वी कैनॉट एड. हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 3 plus 2 divided by 5/3. ऐसे करके 5/8 आंसर नहीं बना सकते. दिस इज रॉन्ग. वी कैन नॉट एड देम until and unless we make the denominator equal. So the first job is to make the denominator equal. Now here in the denominator there is a number 5 and here the number is 3.
So what we will do, we will take the LCM of 5 and 3. LCM of 5 and 3 is 15. So we will make the denominator 15. ठीक है, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से करना है. एंड यहाँ पर 3 को 15 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. सो हियर आल्सो विल मल्टीप्लाई बाय 5. So this is nothing but 9 by 15 plus 10 by 15. That is equal to 9 plus 10 by 15. That is equal to 29 by 15. Denominator add नहीं होता है, सिर्फ numerator add करना. Okay. We'll see the next question. 3 by 8 plus 7 by 12. Now here also we have to make the denominator equal. Currently in the denominator there is a value 8 and there is a value 12. So we will take the LCM of 8 and 12. 8 and 12 का LCM होता है 24. तो 8 को 24 बनाने के लिए we have to multiply by 3. तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 को 24 बनाने के लिए we have to multiply by 2. So we'll multiply 7 also by 2. So it is 9 upon 24 plus 14 upon 24. So answer is 23 by 24. Next. 3 by 5 minus 2 by 3. ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लिखा था, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे. तो 5 and 3 को we will make the denominator as 15. तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, multiply by 5, multiply by 5. This is nothing but 9 upon 15 minus 10 upon 15. That is equal to 9 minus 10 upon 15. That is equal to minus 1 by 15. So answer is minus 1 by 15. Next, multiplication of a fraction. So when we multiply two fractions, the numerators are multiplied as well as the denominators are multiplied. Let us simplify the fraction. मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर इक्वल करने का जरूरत नहीं है. So here we can multiply the denominator. So we can write like this: 2 into 4 upon 3 into 7. So it is 8 by 21. ठीक है. Next, 2 by 3 into 3 by 7 into 7 by 15. तो हम क्या करेंगे? 2 into 3 into 7 upon 3 into 7 into 5. क्या ये सही है? Yes, this is absolutely correct, but this is lengthy. Lengthy इसीलिए क्योंकि इससे नंबर बड़े होंगे, फिर हमें उसे वापस सिंप्लीफाई करना है. So what we will do in such type of cases, पहले हमें जो कॉमन है उसे निकाल देना है, पहले डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है. पहले डिवाइड करने का फायदा ये होता है that the numbers becomes small. So 3 3 cancel, 7 7 cancel. So answer is simply 2 by 5. Next, divide a fraction. When we divide a fraction from another fraction, we have to find the reciprocal of another fraction and then multiply with the first one to get the answer. तो अगर हमें कोई भी नंबर को फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? डिवीजन की जगह पे वी विल पुट मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड जो सेकंड वाला नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, हियर इट इज 2 by 3 divided by 4 by 7. So 2 by 3 we will write as it is. डिवीजन का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड 4 by 7 का we have to do the reciprocal, that is 7 by 4. हमेशा ख्याल रखिए ये जो सेकंड वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना है, फर्स्ट का नहीं. Okay, so here the answer is 7 by 6. ठीक है, जहां पर 3 by 18 डिवाइड की जगह पे आई विल पुट इनटू 2 by 7 will become 7 by 2. वंस अगेन डिवीजन की प्लेस पे आई विल पुट मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड 7 by 9 becomes 9 by 7. 7 7 cancel, 9 2s are 18. So it is 3 by 4. Now let's come to decimal. डेसिमल मतलब वो नंबर जिसमें बीच में पॉइंट आता है. सो हियर यू कैन सी दैट वन नंबर इज रिटन, दैट इज 863.267. तो यहाँ पर हर एक नंबर का
वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है. द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दिस नंबर्स आर डिफरेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो 3 है, just before the point. Now this is the unit place. So ये ones वाला place है. This is tens place. 6 is sitting at the tens place. 8 is sitting at the hundreds place. Point 2. Point के पीछे 2 है. So the number which comes exactly after decimal, that is called tenth place. This is 6 का ये वाला place. This is called hundredth place and this is called thousandth place. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसकी वैल्यू है 3. 6 है, उसकी वैल्यू 6 नहीं है, इसकी वैल्यू है 10 से. सो इट इज 6 into 10, that is 60. This 8 is at the 100 place, so इसका वैल्यू है 8 into 100, that is equal to 800. This 2 का वैल्यू है, it is at the 10th place, not 10th place, it is at the 10th place and that value is 0.2. इसका वैल्यू है 0.06 और इसका वैल्यू है 0.007. ठीक है. अगर हम इन सबको ऐड कर दें, if we add them, then we will get the value as 863.267. ठीक है. Now, how to do addition or subtraction in decimal? So let's take one example. So जब भी हम डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. ठीक है. सो दिस वी हैव रिटन 12.0001. 23.789 में पहले पॉइंट कर देते, देन वी विल राइट 789. दिस इज हाउ वी विल राइट. हियर वी विल राइट 23 माइनस 5.129, तो पॉइंट लिखेंगे हियर 5 एंड हियर 129. ठीक है. इनिशियली देयर इज प्लस, देन देयर इज माइनस. Nothing is here, it means that here we can write 0. Here also I can write 0. ठीक है. प्लस करना है, माइनस करना है, हम प्लस माइनस दोनों चीज साथ में करेंगे. सो इट इज 1 plus 0 minus 0, that is 1 itself. 0 plus 9 minus 9, 0. 0 plus 8 minus 2, 6. 0 plus 7 minus 1, 6. 2 plus 3, 5. 5 minus 5, 0. 1 plus 2, 3. So answer is 30.6601. Next, this is very, very important. Multiplication in case of decimal. First is 12 into 2. We all know the value, that its value is 24. Next, 12 into 20. So what we will do? We will write 12 into 2, 24. And here there is 1 0. So here also we will write 1 0. So answer is 240. Now 12 into 0.2. यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इनिशियली इग्नोर दिस पॉइंट. मान लो कि ये पॉइंट है ही नहीं. सो हियर इट इज 12 into 2. 12 into 2 is 24, बट पॉइंट तो है ना. सो हियर आफ्टर पॉइंट देयर इज 1 डिजिट. पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां पर भी इस तरह से पॉइंट को प्लेस करना है सो दैट there should be 1 digit after the point. So where should we place the point? So point को यहां रखना पड़ेगा ताकि पॉइंट के पीछे एक डिजिट आ जाए. Now here it is 12 into 0.002. So first is ignore the point. 12 into 2 is 24. ठीक है. यहां पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है. सो यहां पर भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आना चाहिए. सो पॉइंट को यहां रखेंगे और फिर आगे एक रख देंगे 0. Next, 1.2 into 0.2. So initially we will consider this as 12 into 2 only. So that is 24. Here after point 1 digit, here after point 1 digit. So in total, there are 2 digits after the point. So it is 0.24. Next, 0.12 into 10. जब भी ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले तो 0.12 इंटू, इसमें क्या है, एक जीरो है. सो एक जीरो है तो ये जो डेसिमल है दैट वी नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड बाय 1 प्लेस. 1 0.
So by one place, we have to shift the decimal. So this will become 1.2. Here there are two zeros. So shift the decimal 2 times towards right hand side. So ये ऐसे shift कर देंगे. So this is become 12.0. That is equal to 12. 0.12 into 1000, 3 zeros. So 3 बार shift करेंगे. एक बार, 2 बार. अभी तो जगह नहीं है, तो एक जीरो डाल देंगे और तीसरी बार. So answer is 120. Next. Divide अगर हो रहा है तो क्या करना है? So 12 divided by 2 is 6. Next, 12 divided by 0.2. Now the problem is that कि अगर न्यूमरेटर में पॉइंट है, so that is still we can handle, but if there is a point in the denominator, तो वो थोड़ा ट्रबल करता है. So our job is to get rid of the point from the denominator. तो डिनोमिनेटर से पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. So here also we'll multiply by 12. This is 120 by 2, that is equal to 60. Next, 1.2 divided by 0.2. Once again, to get rid of point from the denominator, we have to multiply by 10. So it is 12 by 2, that is equal to 6. Next is 1.2 divided by 0.02. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉइंट हट जाए. So 1.2 into 100 is nothing but 120 by 2. That's equal to 60. Next, 0.12 divided by 2. So initially just consider this as 12 by 2 only. So 12 by 2 is 6. But here, point numerator में है and there are 2 digits after the point. तो यहाँ पर भी 2 digit होने चाहिए point के पीछे. So it is 0.06. Next, 0.12 divided by 20. अभी ये 2 था, यहाँ 20 है. So 2 था तो आंसर 0.06 था. Now if it is 20, so answer is 0.006. 200 होगा तो 0.0006. यहाँ पर 0.0085 divided by 17. Initially consider this as 85 by 17 only. 85 by 17 5 होता है. So we'll write 5. But here after point there are 4 digits. तो यहाँ पर भी पॉइंट के पीछे 4 डिजिट होने चाहिए. बट वी हैव ओनली 1 डिजिट. सो एक तो 4 डिजिट बना देते हैं पहले. 1 2 3, ये हो गए 4 डिजिट. यहाँ पर पॉइंट डालेंगे. नेक्स्ट, 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.25. डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस ऑल्सो विल मल्टीप्लाई बाय 100. So this will become 1.25 divided by 25. Initially इस पॉइंट को भूल जाओ and consider it as 125 by 25 only. So 125 by 25 5 होता है. बट पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट होने चाहिए. नेक्स्ट, 0.04 into 1 0.162. कैसे करेंगे? तो 0.04 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 4/100, ऐसे लिख सकते हैं. एंड 0.162 को वी कैन राइट एज 162/1000. करेक्ट. सो दिस इज 4/100 into 162/1000. दैट इज नथिंग बट 4 into 162 अपॉन कितने जीरो है? टोटल 5 जीरो. ठीक है. 162 into 4 कितना होता है? दिस इज 8 and this is 64. So this is 648 into, this is what? 10 raised to 5, correct? This is 10 raised to 5. लेकिन इस 10 raised to 5 को अगर हम न्यूमरेटर में भेज दें, so that will become 10 raised to -5. So answer is 648 into 10 raised to -5. बट आप ऑप्शन में देखोगे कहीं पर भी 648 नहीं लिखा है, उन्होंने 6.48 लिखा है. तो 6.48 करेंगे तो बन जाएगा 2 पॉइंट. यहाँ पर हमने पॉइंट डाला है, सो दिस विल बिकम -3. तो आंसर इज ऑप्शन बी.
Next, 3 into 3 into 3 into 3 into 3. We know that that is nothing but 243. अच्छा, अभी कहाँ पॉइंट डालना है दैट वी विल सी. ओके, फर्स्ट तो 3 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज 0.3, सो आफ्टर पॉइंट देर इज 1 डिजिट. हियर आफ्टर पॉइंट देर आर 2 डिजिट्स. हियर आफ्टर पॉइंट देर आर 3 डिजिट्स. ठीक है, सो आफ्टर पॉइंट देर आर 3 डिजिट, और यहाँ पर 30 है तो उसका भी ख्याल रखना है. सो आफ्टर पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इन टोटल देर आर 6 डिजिट. तो 1 2 3 6 डिजिट हो गए. पॉइंट यहाँ पर आएगा, बट ये 30 का जीरो है इसमें, सो इंटू 10 करना पड़ेगा. सो एक जीरो निकाल देंगे तो आंसर इज 0.00243. दिस इज द करेक्ट आंसर. So I hope you have understood this particular topic, and decimal and fraction थोड़े complicated होते हैं, तो इसकी practice करें and you should be comfortable with decimal and fraction. So I hope you have understood my session. तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहे बिकॉज मैथ इज इजी. थैंक यू.